Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Neha Iram, dietitian and nutritionist. आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहमान। आइए जानते हैं उनकी ज़ुबानी के उनकी ज़िंदगी में क्या पड़ाव आए, उनकी तालीम कहाँ से है और उनके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं। तो चलिए डॉक्टर अताउर रहमान से ही उनके हाल पूछते हैं। जी डॉक्टर, कैसे हैं आप? मैं ओरिजिनली वॉ कैंट से मेरा ताल्लुक़ है। मेरी पैदाइश भी वहीं है, मेरी स्कूलिंग वगैरह कॉलेज तक जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल है, हायर सेकेंडरी, वो एजुकेशन वहाँ की है। उसके बाद जो हायर एजुकेशन है फिर मेरी वो पेशावर से है, KPK से है। 6 साल वहाँ मेरे सफ़र के हैं। MPhil तक जो प्रोग्राम था वो मैंने वहाँ से किया। तो बस ये एजुकेशन वहाँ कैंट से इनिशियली, देन पेशावर, और उसके बाद से प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ होता है। तो वो फिर हम मेरा ख्याल है बात करते हैं उस पर। जी सर, आपकी क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रही अपने एजुकेशन करियर? जी, ये अच्छा सवाल आपने कर दिया इसी स्टेज पे, क्योंकि ये स्कूल से रिलेटेड और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है ज़्यादा। और बाद की जो इंसान की जो ग्रोथ है, जो लीडरशिप क्वालिटी स्किल्स हैं, वो असल में मैटर करती हैं आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जो मेरी अपनी लाइफ में जिनका बहुत यानी लॉन्ग स्टैंडिंग जो है वो इम्पैक्ट्स हैं। तो स्कूल के ज़माने तक तो वैसे कोई एज़ सच इतना मैं स्पोर्ट्स में अलबत्ता था। अपने क्लब के लेवल पे मैं क्रिकेट खेलता था। क्रिकेट यानी मैं ओपनिंग बैट्समैन था और बॉलिंग भी करता था, विकेट कीपिंग भी मैंने की है, और टीम का मैं वाइस कैप्टन भी था अपने क्लब का। ये गालिबन मैट्रिक तक, FSC तक मैंने, इंटरमीडिएट तक यानी मेरी ये स्पोर्ट्स जारी रही। बाकी जो है कभी कभार स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, लेकिन रेगुलर नहीं था। रेगुलर एक्टिविटीज़ मेरी स्टार्ट होती हैं जो जिन्होंने मुझे कम्युनिकेशन सिखाई, जिनकी वजह से मैं कॉन्फिडेंस मेरे अंदर डेवलप हुआ, और वहाँ से पैशन डेवलप होता है टू लीड, टू एक्सेल इन लाइफ। And this happens in University of Peshawar, Agriculture University, Peshawar, where I initiated and I pioneered literary society. First literary society, Evergreen Literary Society, was named, and I was the Secretary General of the society. इसमें हम डिबेट्स भी की, पोइट्री भी हुई, वहाँ पे इवेंट्स भी होते थे बहुत सारे। तो उसके साथ फिर दूसरे इवेंट्स एक्स्ट्रा करिकुलर में साइंस क्लब एक डेवलप किया। उसमें हम साइंटिफिक इनोवेशंस की बात करते थे, साइंटिफिक अगर कोई एग्जीबिशंस हैं वहाँ के टूर्स वगैरह करना। तो ये इस तरह की जो बेसिक जो है नो अपने आप को सेल्फ ग्रूमिंग के लिए हमारी 300 तकरीबन मेंबर्स थे उसमें, स्टूडेंट्स। तो आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ साइंस क्लब, बाय द वे, मैंने लीड किया हुआ है यूनिवर्सिटी में। एंड आई हैड अ पैशन फॉर राइटिंग एज वेल। बोलने का वहाँ से मुझे मौका मिला, यानी सीखने का एवरग्रीन लिटरेरी सोसाइटी में, देन साइंस क्लब में। लिखने का मुझे यानी मौका मिला, लिखने का मुझे शौक था। वो मुझे ज़्यादा मेरी जो उसमें यानी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है वो जब आई वाज द चीफ एडिटर ऑफ यूनिवर्सिटी मैगजीन। खिरमन यूनिवर्सिटी मैगजीन का नाम था, अभी भी शायद पब्लिश होता हो। तो आई वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडिटर, वेयर आई supervised Pashto, English, Urdu sections, and it is I am talking about 94 यूनिवर्सिटी ईयर्स हैं ये सारे। डिबेट्स भी वहाँ की, वहाँ लिखा भी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी यूनिवर्सिटी में चली, और उससे यानी आई हैड दिस पैशन एंड आई लर्न हाउ टू एक्सेल इन लाइफ, हाउ टू लीड इन लाइफ। दैट वाज द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट और किकिंग पॉइंट। दैट वाज माय स्टार्टअप। सर आपकी एजुकेशन तो बहुत वर्सटाइल स्टूडेंट की तरह गुजरी है, माशाल्लाह। सर आपकी अब तालीमी निज़ाम जो तालीमी आप तालीम आप करते रहे, लेते रहे, और उसके बाद वर्क जब आप काम में आए,
तो आपको क्या एक्सपीरियंस करना पड़ा, क्या आपको दुश्वारियां आई? यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट चूज़ किया मैंने वो न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट था, जिसकी मेरे तमाम दोस्तों ने यानी दे अपोज्ड इट कि आपने ये कौन सा डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि उस टाइम पे न्यूट्रिशन, एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 1991, नो वन हैज़ एनी आइडिया अबाउट न्यूट्रिशन। बहुत बहुत लिमिटेड स्केल पे न्यूट्रिशन सिर्फ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर में उन्होंने स्टार्ट किया। बेसिकली इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड देन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। अदरवाइज ये गालिबन होम इकोनॉमिक्स में कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, तो इट वाज नॉट दैट मच डेवलप। न्यूट्रिशन जो है वो यानी फ्रॉम द स्टार्ट I accepted this challenge. Okay, I don't want to do smooth sailing in my life. I accepted the challenge of choosing a rough and tough ground where I should play and I should uh, harness or hone my skills. So nutrition was a challenging, subject at that time. जॉब के लिए इतना मुझे वैसे डिफिकल्टी नहीं हुई, क्योंकि आई ओरिजिनली हेड फ्रॉम वॉक एंड और आई जस्ट एंड अप हैविंग माय फर्स्ट जॉब एट Islamabad Shifa International Hospitals while I was doing my MPhil thesis. I got an offer before completion of the thesis, so I started immediately. वहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई 6 months इनिशियली जो थे, because we didn't have any proper training or internship system in the universities. So Shifa International was good at training, because most of the physicians, medical staff, they repatriated from America, North America, या वो कनाडा से आए थे या अमेरिका से, and they were very senior doctors. I had a chance to work with them. उनके साथ मुझे बहुत लर्निंग की यानी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनके साथ राउंड्स में, उनके साथ सेमिनार्स में, डिबेट्स में. Anyway, there were a lot of learning environment at Shifa International Hospitals, especially with the medical team. वहाँ से मुझे, and they had a lot of questions on nutrition. न्यूट्रिशन में उनका कीन इंटरेस्ट मैंने देखा, क्योंकि दे वर वेरी मच अवेयर व्हेन दे वर्कड इन अमेरिका एंड कनाडा. उनको उस वक्त हमारे पास डायटेटिक्स मैनुअल्स वो इंपोर्ट करके लेके आए अमेरिका से, एंड दे गेव इट टू मी. वो मैंने यूज़ किया, उससे खुद सेल्फ लर्निंग का मौका मिला, फिर खुद क्रिएट की पॉलिसीज़ और पूरा सिस्टम क्रिएट किया वाइल आई वाज वर्किंग एट शिफा. वहाँ फिर मैं अपना सेक्शन था हमारा न्यूट्रिशन. I was promoted to, I started as a trainee and I was promoted to within 2 years to section head as in charge of clinical uh, nutrition section. Then I made policies, I prepared education material and started working on research on the sidelines. Uh, I subscribed the Journal of American Dietetic Association, JADA, right from my first job, right from my first year of my practice, 1995. And till to date, I'm following last 28 years. I'm a regular follower of clinical practice guidelines of American, now they call it Academy of Nutrition and Dietetics. So it was really, very satisfying experience, full of challenges. People didn't recognize. I have to tell the spelling of nutrition. When I introduce myself, they ask me, what is nutrition? Then I tell them Nutrition, nutrition. This is a science. They consider it something different. Some people consider at that time is a kitchen, kind of work, kitchen dietitian का concept था. Cooking से related जो recipes हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं समझते थे कि dietetics can do more than this. Clinical aspect बिल्कुल जो था, it was undermined or ignored or not mature as it is of now. It has developed into full-fledged science with multidimensional applications of nutrition.
So curiosity was there, passion was there, and faced a lot of challenges. लेकिन उसको I made it my strength as I developed the skills by exposing myself into that challenging situation, or I was out of comfort zone. That was the key, and that was I think giving me an advantage to groom, to introspect, hard work, uh, the environment of competing with the medical teams, medical people who immigrated, repatriated from North America. So it was a very tough environment, and I think that was the key, and it boosted my learning, my critical analytical skills, problem solving skills, leadership skills, communication skills, presentation skills, and research skills. I think I took it as a great advantage and opportunity for my future ladder of success. सर हमारे नाजरीन को ये भी बताएं कि आप किन किन हॉस्पिटल्स में काम कर चुके हैं, वर्किंग एक्सपीरियंस आपका क्या है, आप किन कंट्रीज में काम कर चुके हैं? जी, स्टार्टेड फ्रॉम शिफा, जैसे मैंने आपको बताया, इस्लामाबाद शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में तकरीबन 3 साल काम किया, एंड when I left, I was in charge of nutrition section at Shifa International Hospital. Then Shaukat Khanam Cancer Hospital from 98 to 2007. Almost 9 years, I had opportunity to work at Shaukat Khanam Memorial Cancer Hospital and Research Center. Shaukat Khanam mein my focus was narrowed down to cancer oncology and ICU critical care units. और रिसर्च का काम वहाँ पे it got more encouragement. It gave me more space to work for patients like acute lymphoblastic leukemia, patients who are children, kids, उनके साथ काम किया, एंड एट द सेम टाइम वहीं पे मैंने अपना रिसर्च PhD थीसिस वगैरह कंप्लीट किया सारा oncology patients, pediatric population के ऊपर. तो my super specialty actually is pediatric oncology beside critical care. तो Shaukat Khanam Cancer Hospitals में I presented a lot of abstracts, and then from there I went to Europe and to other countries and presented in many conferences my original research papers. I published that time. I published in Journal of Pakistan Medical Association, Journal of Ayub Medical College, Journal of Pakistan Medical, Sciences. So I started publishing while I was working as again as I was in charge of nutrition services at Shaukat Khanam. तो रिसर्च पब्लिकेशंस मेरी वहाँ से स्टार्ट होती हैं. लर्निंग एनवायरनमेंट, अगेन आई वुड एम्फसाइज के दिस इज़ ऑल अबाउट लाइफ लॉन्ग लर्निंग. तो जो चीज़ मुझे जिस चीज़ ने मुझे केप्ट गोइंग वाज कि मुझे लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता रहा, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट मिलता रहा, और उसमें आई मेड इट एज अ स्टेपिंग स्टोन for building my career. So or research was all the time it was my part, you can say, baggage, part and parcel of my professional life. Without research, I would say I would not have been into at this position, into this scenario that you can see right now. And it give credit to my research activities, or research papers, journals, and researchers that I was in touch with at that time. तो उसके बाद I moved to working for 9 years for शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल. अच्छा, इसमें मैं और भी बताता चलूँ तो ये इट विल बी ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट जो हमारी यंग जनरेशन है उसकी मोटिवेशन के लिए कि आई ट्राई टू बी इन टच विद द मीडिया. हमारे यहाँ
मीडिया जो सेंसिटिविटी है कम है हमारे प्रोफेशनल्स में। आई वाज सेंसिटिव कि न्यूट्रिशन प्रोफेशन जो है इसको प्रमोट होना चाहिए। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, स्टूडेंट्स को बताता हूँ, ये अजीब सी मिसाल है कि जंगल जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा। जो दिखता है वो बिकता है, सीइंग इज बिलीविंग। तो जब तक आप यानी प्रेजेंट नहीं करेंगे ना आपने आप, यू हैव टू मार्केट योर सेल्फ। तो हमारे जो माशाल्लाह से अभी तक ये शायद इशू है कि वी फील, आई डोंट नो व्हाई देयर इज अ फैक्टर ऑफ रिलक्टेंसी। मैं समझता हूँ कि शायद आई ऑलवेज बिलीव इन माय प्रोफेशनल आइडेंटिटी। Nutrition is the landmark. You can say the dynamics of healthcare are directly influenced and changed by this profession. Are changing and will be changed drastically. जिसको कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट किया हेल्थ केयर को, बीइंग अ प्रिवेंटिव थेरेपी और मेडिसिन, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है इसके अंदर। तो इसका बिलीफ हमारे शायद लोगों में नहीं है या इसकी अंडरस्टैंडिंग की कमी है। दैट आई रियलाइज्ड फ्रॉम द बिगिनिंग एंड आई वाज वेरी वोकल एंड आई वाज वेरी क्लियर अबाउट the importance of nutrition. Whenever I speak with someone, I spoke with someone, I spoke from my heart and with full confidence, full belief, complete belief, एक कन्विक्शन जिसको कहते हैं ना, उसके साथ मैंने बात की। तो इससे न्यूट्रिशन प्रमोट करने में मुझे हेल्प मिली। एंड आई अपीयर्ड ऑन मीडिया, आई अपीयर्ड ऑन जियो टेलीविजन, आई अपीयर्ड ऑन अदर चैनल्स एज वेल। And 2001, from 2001, 2, 3, 4, 5, those were the years I even started writing in newspapers. So I used the media as well to promote. Basically my intention was to promote my profession. मेरे प्रोफेशन की जो ग्रोथ है, दैट इज़ माई ग्रोथ। मेरी आइडेंटिटी इज़ माई प्रोफेशन। अगर मेरा प्रोफेशन नीचे जा रहा है तो हाउ कैन आई डेवलप माई सेल्फ, मैं ऊपर नहीं जा सकता। So I always spoke about my professional, identifications, professional जो मेरी links हैं, I try to promote them by writing, by speaking. I organize, more than 20 conferences, seminars, workshops, more than 20 at national level during those years when nobody is talking about nutrition, or it was just at सॉरी, इट वाज एट इनिशियल स्टेज और बहुत कम लोग इस पे बात करते थे। आई ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम्स इन कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, तमाम जगहों पे, आज़ाद कश्मीर, तमाम जगहों पे वी रेज अ वॉइस इन फेवर ऑफ न्यूट्रिशन टू प्रमोट दिस प्रोफेशन। एंड it was happening during from 98, the first small gathering. I will now take you to the another landmark achievement in our professional lives that affected at national level and my own career, and that was the pioneering a nutrition society. And we first time we held the meeting at Shifa International Hospital in 1997। पहली दफ़ा न्यूट्रिशन सोसाइटी की जो बात चली डाइटेटिक्स और न्यूट्रिशन की, ये 97 था। एंड मे बी द पिक्चर विल बी रिलीज्ड आल्सो। इस इंटरव्यू के साथ भी आप वो पिक्चर देख सकते हैं जिसमें हम 5-6 डाइटिशियंस हैं। वी टॉक्ड अबाउट initiating or creating a nutrition society, dietetic society at Pakistan level. But somehow we couldn't materialize that dream into reality. Then at Shokat Khanam, I tried again. I retried, and I was successful. And I would thank really our medical director at Shokat Khanam Hospital, Dr. Moinul Haq. He was my mentor, and he was my big support to create this society. First of all, he helped me to organize a national conference at Shokat Khanam Cancer Hospital in 1999, where the experts from Karachi, Lahore, Islamabad, all were invited, and they joined us in that meeting. And this was the first,
formal meeting of dietitians, famous dietitians from Karachi like Nilofer Kam. I think Dr. Salma Badruddin from Aga Khan, she came and joined us. Dr. Alif Khan from Peshawar, he came. Dr. Rizan Khan joined us from Shifa International. People from Home Economics, Dr. Matina Zia, Dr. Wasim Bano Marhuma, uh, and Ghazala Parvez, Dr. Neelam, Doctor, I would marhum Saeed Nagara, if I don't remember him, he was again one of the key persons helping us from our university. तो इन सारे लोगों ने मिल के वहाँ डिसाइड किया एंड देन वी formally we launched Pakistan Dietetic and Nutrition Association, which was the first dietetic society or association in Pakistan, and it was inaugurated in 2000 November 2000 at Marriott Hotel Islamabad in the presence of health uh, department, the minister were there, and this was a huge, inaugural ceremony, and it was very successful. Media covered it, and it was talk of the town that time because such thing was happening first time, and people want to know about this and the objective of this society, and there was keen interest for the future and the, coming projects that are to be announced by Dietetic and Nutrition Association. तो ये सारा इस तरह का यानी सफ़र था जो कि यहाँ पाकिस्तान में मेरा रहा और इस दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स आई ओपन द गेट फॉर द ट्रेनिंग इंटर्नशिप्स एट शोबत खानम स्टार्टिंग फ्रॉम शिफा इंटरनेशनल. I think I was able to train around 200 plus 250 dietitians, which are most of them maybe not working, but some of them are working, and they have more than 20-year experience. Some of them are, mashallah, now HODs at very renowned hospitals in the country. Some of them have migrated to UK, Canada, America, Australia, and they are, mashallah, they are doing best. And this all happened as a teamwork actually. हमारे पास जो टीम थी चंद लोग थे, टोटल हम लोग 50-100 से ज़्यादा नहीं थे डाइटिशियंस एट दैट टाइम अंटिल 2007, लेकिन इट वाज यूनाइटेड फोरम, सब लोग मिलके काम, टीम वर्क था, पैशन था, प्रोफेशन यानी पर्सनल अपनी ज़ात पीछे थी और हमारा प्रोफेशन हमारे लिए जो था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. आई थिंक इसलिए भी ज़्यादा इसका आउटपुट ज़्यादा था और इसका एक जो ऑरा है जो कह लें या उसका इम्पैक्ट जो था ऑन हार्ट्स एंड माइंड्स, जो यंग जनरेशन जब अभी नए नए लोग बच्चे आ रहे थे उनको ज़्यादा उन्होंने इंस्पायर किया और दैट वाज द रीज़न कि गवर्नमेंट लेवल पे हमने 20 से ज़्यादा जो इवेंट्स किए गवर्नमेंट लेवल पे भी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में और बाकी जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं पंजाब में, सिंध में, फेडरल लेवल पे, they took notice of it. There is something going on which is called nutrition, or it has a role in medical sciences, it has a role in community, it has a role for maternal nutrition, for pediatric child nutrition, deficiency diseases, iodine, vitamin, वो keeping them aside, हमारी लाइफ में, लाइफ स्पैन में न्यूट्रिशन हैज़ अ मेजर रोल, and in prevention of diseases nutrition has major role, and in the treatment of diseases nutrition has become a therapy now. उसका notice लिया गया. I think then HEC got involved and they started a lot of programs. More than 30 universities are now offering nutrition programs, and it has a link, with that campaigns and efforts that were carried out by our team at PDNA, Pakistan Dietetic and Nutrition Association. And I appreciate people from Karachi, Salma Badruddin, Dr. Nilofer, Dr. Rizan Khan from Islamabad, from Lahore, from Peshawar. Home economics colleges played a great role. I would appreciate their efforts. We were united. So it was, a win-win situation for professionals of nutrition and the profession of nutrition itself. मेरा ख्याल है कि इतना काफ़ी है इस सवाल के जवाब में, काफ़ी तवील आपको मैंने इसका बैकग्राउंड दे दिया. वंडरफुल वंडरफुल डॉक्टर, आप जैसे अगर मेंटोर हों तो क्यों ना स्टूडेंट जो हैं शाहीनों की तरह होने. हमारे प्रोफेशन में आप जैसे मेंटोर्स की ज़रूरत है. डॉक्टर, हमें ये बताएं कि
डिफरेंट कंट्रीज में हमें काम करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, तो आपके Yes. पास कौन सा लाइसेंस मौजूद है और कौन से सर्टिफिकेशंस ली हैं आपने? अ, देखिए उस टाइम पे तो जब हमने पीडीएनए के फोरम से हमने वी स्टार्टेड registration licensing. I think about 2003, and our initially it was chaired by Dr. Rizal Khan, Shifa International में उनकी जो चीफ डाइटिशियन है। तो फर्स्टली तो मुझे पीडीएनए का रजिस्ट्रेशन मुझे मिला राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और देन आई व्हेन आई मूव टू सऊदी अरेबिया, I had a chance to obviously to work there for years, 14 years. So I have to get license from Saudi Commission uh, for health specialties, and they registered me as a specialist. और उनका लाइसेंस मेरे पास है, और दैट इज़ व्हाट आई एम यूजिंग। और इसके अलावा जो है कॉन्फ्रेंसेस में और कोर्सेज में आई वेंट अब्रॉड, आई वेंट यूरोप, आई वेंट टू फार ईस्ट, आई वेंट टू अमेरिका, जर्मनी, many countries. So I got a lot of courses. I attended a lot of courses from UK, from America, from Germany. So those those certifications are very valuable for me, and they help me a lot in my career development and my, the growth of my career and promotion. Plus, I would mention the most significant certificate is in research from University of San Francisco, California University, San Francisco. UCLA San Francisco in research, and that was like 6 months to 1 year time. It was very extensive research course, and they are offering with the help of British Medical Journal (BMJ). And maybe my interview, I don't know, maybe you have seen it or not, but I was published at British Medical Journal. You can also maybe share that interview on. It is available on their website, by the way. So this is because I completed successfully that course, that certification, and that was beside nutrition. I got certification of research. So nutrition research मेरे लिए और भी इस वजह से आसान हो गई। प्रैक्टिस में मुझे आसानी मिली। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की हम बात करते हैं। It is impossible without knowing the basics of research. So that was the reason I went for this, research certification. I have 5, 6 research projects completed under my supervision as a principal investigator in Saudi Arabia, and there are maybe 5 to 10 projects are in the pipeline. I'm still working with the, you know, as a co-investigator. After I left Saudi Arabia, I worked for still as a researcher with King Abdullah International Medical Research Center, Riyadh. Still, I am in part of their team as a co-investigator, and we are sharing different ideas, and we still have some projects to complete in Saudi Arabia that I'm considering to, resume again very soon. डॉक्टर, आपकी क्या कंट्रीब्यूशंस हैं डायटेटिक्स प्रोफेशन के लिए, डायटेटिक्स सर्टिफिकेशन के लिए, फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए आपकी क्या कंट्रीब्यूशन रही? मेरी तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मेरी कंट्रीब्यूशन सिर्फ ये है कि मैंने न्यूट्रिशन चूज़ किया, इसमें मैंने काम किया। आई डोंट थिंक सो कि मैं इसको बहुत ज़्यादा अपने को करूँगा, कंट्रीब्यूट करूँगा। बट वट एवर आई डिड, आई वॉज ट्राइंग, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर वॉज माई पॉलिसी। इसी से मैंने लर्न किया। आई थिंक वट एवर आई लर्न, आई वुड से दैट वाज माय कंट्रीब्यूशन, कि मैंने उसके बाद अगर कुछ बोला है, लिखा है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट लर्निंग, एंड इट क्रेडिट गोज टू माय प्रोफेशन। मेरी आइडेंटिटी न्यूट्रिशन है। अगर मैं न्यूट्रिशनिस्ट ना होता तो नो वन वुड लिसन टू मी। आई थिंक नो वन वुड लुक एट मी, notice me. All happened because of this, noble profession.
I think it is a noble profession. You can save the life of the people. You can impact and change the lives of millions of people. तो बस ये ट्रेनिंग को मैं कहूँगा कि मैंने आई ओपन द गेट फ्लड गेट फॉर ट्रेनीज सऊदी अरेबिया में मैंने 1000 से ज़्यादा इंटर्नीज को ट्रेन किया। इसके अलावा मेरे पास यूके से भी लोग आए, अमेरिका से भी मुझे मैं रजिस्टर्ड प्रिसेप्टर हूँ एकेडमी के साथ, एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। वहाँ से भी ऑफ एंड ऑन वो स्टूडेंट्स भेजते हैं मेरे पास। मिडल ईस्ट से मेरे पास स्टूडेंट्स अभी तक आते हैं, एशियन कंट्री से तो हैं ही है इधर से। तो अभी तो लास्ट ईयर कुछ सालों में, लास्ट 2 इयर्स में मैंने रिसर्च में भी ट्रेनिंग्स करवाई। आई थिंक 1000 2000 तो अभी हमारे रिसेंट 2 इयर्स में हमने लोगों को ट्रेन किया है, रिसर्च इंक्लूडिंग रिसर्च। तो बस ये है जो आई एम स्ट्रगलिंग, और मेरा यानी ये ऑब्जेक्टिव है कि in Pakistan we can make a paradigm change as far as the health care is concerned. उसके लिए nutrition is an excellent tool and it can become a vehicle of change. बस यही है, मुख्तसर सी चीज़ें हैं, कोई बहुत आउटस्टैंडिंग मैं कोई क्लेम नहीं करना चाहता अपने बारे में। आई थिंक यू पीपल कैन जज। Doctor, what was your relationship with media in your educational and professional background? मीडिया बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने पहले बताया कि सीइंग इज़ बिलीविंग, और जो दिखता है वो बिकता है। हमें मार्केट करना चाहिए न्यूट्रिशन को, नया प्रोफेशन है। तो मैं तो शुरू से आई वाज एंगेज्ड इन मीडिया व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी। जंग अखबार में ना इकरा पेज एक आता था, उसमें आई यूज्ड टू राइट यूनिवर्सिटी रिपोर्ट्स। मैं वो जंग अखबार में रिपोर्ट्स मेरी छपती थी, आई वाज अ स्टूडेंट। तो दैट वाज माय फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द मीडिया एंड विद द नेशनल मीडिया। प्रोफेशन के लिए इंटेंशनली गेट आई ट्राई टू गेट मोर कनेक्शंस। उसमें फिर जो पीटीवी पे भी मेरे गालिबन कुछ प्रोग्राम्स हुए, ये मुनीज़ा हाशमी और ये लोग करते थे, आई डोंट रिमेम्बर। बट जियो प्रोग्राम्स मेरे 2 प्रोग्राम्स हुए, जान है तो जहान है। उसके अलावा और भी मीडिया चैनल्स में, गालिबन बीबीसी में भी एक इंटरव्यू हुआ। तो आई ट्राई टू यूज मीडिया एज यू नो एज अ टूल सो आई कैन स्प्रेड द वर्ड, I can spread and disseminate the knowledge about nutrition, and eventually उसका benefit profession को हो रहा था। न्यूट्रिशन में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा। फिर मैं आई वाज वर्किंग एट शिफा शोबत खानम एट दैट टाइम। तो एक मोटिवेशन था स्टूडेंट्स के लिए भी और यंग डाइटिशियंस के लिए कि यू कैन स्टिल work as a nutritionist at a respectable positions at respectable organizations। तो उसको फिर इंटेंशनली भी आई ट्राई टू अपीयर ऑन मीडिया एंड आई यूज टू राइट एज वेल इन द न्यूज़पेपर्स। मीडिया के साथ जो है वो यानी अच्छा अच्छा स्टार्ट में ही मेरा लिंक था। इट वाज फॉर द गुड ऑफ प्रोफेशन। डॉक्टर, आपका रिसर्च और वर्क में अब्रॉड कैसा एक्सपीरियंस है और क्या-क्या आपने काम किया अब्रॉड, वर्क एंड रिसर्च? देखिए इसमें मैंने कोई 20-30 आई डोंट रिमेम्बर एब्स्ट्रैक्ट्स प्रेजेंट किए, एंड आई गॉट इनविटेशंस माय ओन रिसर्च, and I got invitations from Australia to Canada and America, all the the major countries, including UK. I submitted my abstracts, conferences, and they invited me, and I presented in many conferences. And I could not present in many conferences as well because of the budgetary issue and other limitations। उस वजह से मैं जा नहीं पाता था। लेकिन मुझे पूरे यूरोप से, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, हर जगह से इनविटेशंस मुझे मिली टू जॉइन, टू प्रेजेंट माय रिसर्च इन देयर कॉन्फ्रेंसेस। नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, जैसे अमेरिका की है एकेडमी, कैनेडियंस है, ब्रिटिश डायटेटिक एसोसिएशन है, ऑस्ट्रेलियन डाइटिशियंस की है।
उनकी एनुअल मीटिंग्स में IUNS है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ न्यूट्रिशन साइंसेज। आई यूज टू सेंड माई पेपर्स एंड एब्स्ट्रैक्ट्स और मोस्टली दे एक्सेप्टेड, और मुझे इनवाइट किया उन्होंने, और कुछ जगहों पे मैं गया और कुछ में मैं नहीं जा सका। लेकिन वहाँ जैसे मैं वियना का मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, फर्स्ट टाइम आई प्रेजेंटेड एट 17th International Congress of Nutrition held by International Union of Nutrition Sciences. That was my first international exposure and in international congress at Vienna, where I think 3,500 researchers they participated. 3500 लोग थे उसमें, and I was one of them. मुझे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन का जो जो इसका होराइजन जो मेरे सामने अनफोल्ड होता है, अनवीलिंग होती है, इसके पर्दे जिसको कहते हैं ना, वो उठ जाते हैं, नज़र दूर तक जाती है, आइडियाज़ दिमाग की यानी वो जो क्लोज हैं फैकल्टीज ओपन हुई, बिकॉज व्हेन आई विजिटेड वियना ऑस्ट्रिया इन 2001, वहाँ से फिर मुझे मेरा पैशन या इंटरेस्ट जो है ना वो मल्टीफोल्ड हुआ, बहुत उसको आप कह लें स्पीडी एक्सपीडाइट होता है। बहुत सारे नए आइडियाज़ पे फिर मैंने शौकत खानम में रहते हुए बहुत सारे पे काम किया। मैंने ब्रेस्ट कैंसर पे काम किया हुआ है, मैंने नॉन हॉजकिन लिम्फोमास पे काम किया हुआ है, मैंने एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमियाज पे काम किया हुआ है, मैंने हेड एंड नेक कैंसर्स पे काम किया हुआ है, मैंने यानी बहुत सारे और टाइप्स हैं जिसमें हम काम करते रहे। और मेरे पास स्टूडेंट्स आए, मास्टर डिग्री के थीसिस भी मैंने सुपरवाइज किए। दिस वाज कनेक्शन ऑफ रिसर्च, तो कंटिन्यूअसली PhD तक भी सुपरवाइज किए थीसिस। तो रिसर्च जो है वो इट्स अ बैकबोन ऑफ एनी प्रोफेशन। अब देख लीजिए मुझे जो द गेन आई यू नो आई आई हैव गॉट इन माय करियर, रिसर्च हैज आई थिंक 80% रोल इन इट। तो इंटरनेशनली जो है वो मेरा एक्सपोजर अगेन इट वाज बिकॉज ऑफ रिसर्च। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जो मेंटल होराइजन्स है ना उसमें पैराडाइम शिफ्ट होता है जब व्हेन आई ट्रैवल्ड अब्रॉड, एंड आई ट्रैवल्ड टू मेनी एरियाज, गल्फ, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, इवन इधर फार ईस्ट, मलेशिया, कुआलालंपुर, यहाँ तक मैंने ट्रैवल किया। आई प्रेजेंटेड, आई इंटरेक्टेड विद द प्रोफेशनल्स, विद द एक्सपर्ट्स, और that gave a lot of creativity into my work. डॉक्टर, आपने अपनी सुपरविजन में कोई डायरेटिक्स या दूसरे प्रोफेशंस के लिए कोई प्रोग्राम, कोई क्लिनिकल और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च किए? जी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात ही हम कर रहे हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तो फ्रॉम द बिगिनिंग आई डेवलप न्यूट्रिशन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर interns, dietetic students. Then I develop program for physicians. I also develop program for nurses and paramedical staff. Because physicians are involved with the patient nutrition care, nurses are directly on the frontline soldiers, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो उन सब के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको क्लैरिफाई करना, उसको मज़ीद यानी उनको पॉलिश करने के लिए, ताकि उनका जो न्यूट्रिशन जो रोल है उसमें ज़्यादा यानी डेप्थ लाई जा सके और उसको ओन कर सके। फिर हमारा स्टाफ ओन करके तो आउटकम ऑफ न्यूट्रिशन थेरेपी जो है वो अचीव किए जा सकते हैं इन अ बेटर वे। इट्स अ टीम वर्क। तो फिजिशियंस के लिए किया, डाइटिशियंस के लिए किया, स्टूडेंट्स के लिए किए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। मैंने डिप्लोमा भी 2001 में शौकत खानम में फर्स्ट न्यूट्रिशन डिप्लोमा भी लॉन्च किया वहाँ पे। फिर मैंने बाहर सऊदी अरेबिया में सऊदी कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम 1 ईयर का वो डेवलप करके दिया उनको। 3 मंथ्स इंटर्नशिप प्रोग्राम डेवलप किए, 4 मंथ्स का किया, 6 मंथ्स का किया, 1 ईयर का किया। There's a variety of training programs. I have been into it. I have been developing and launching, and I was the director of training in those programs. इनके लिए मैं उसको डायरेक्ट भी करता रहा सऊदी अरेबिया में। शौकत खानम में भी डायरेक्ट किए और शिफा से स्टार्ट किया सर। मुझे ये था कि
I cannot promote profession, you know, while standing alone. मुझे टीम बनाना है, इसमें एक अच्छे लोगों को नॉलेज शेयर किए बगैर टीम नहीं बन सकती जो यंग है हमारे स्टूडेंट्स। दिस वाज ऑन द बैक ऑफ माय माइंड। ये आज तक यही चीज़ है कि मैं समझता हूँ एक अकेला है, दो 11 है। तो मैंने टीम बनाई, उन्हीं उसी टीम ने फिर मुझे हेल्प आउट किया सोसाइटी लॉन्च करने में भी और न्यूट्रिशन प्रमोट करने में भी। मेरे स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज अप्रिशिएट एंड गिव देम क्रेडिट कि मेरे साथ मेरी फुल सपोर्ट मेरे स्टूडेंट्स की रही, जिनको मैंने तैयार किया, जिनको मैंने अवेयर किया, एंड दे गिव मी फुल सपोर्ट। और आई वाज एबल टू अचीव मोर विद देयर सपोर्ट। स्टूडेंट्स, they gain from me and I gain from them. So it's a two-way process, exchange of knowledge। और इससे जो है वो ऑफ कोर्स यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का कॉन्सेप्ट जो है वो इम्प्रूव होता है, वो ज़्यादा फर्निश होता रहा। फिर अब तो बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम शुरू कर दिए पाकिस्तान, यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन दैट टाइम नोबडी वाज वर्किंग ऑन इट। इस साइड पे काम नहीं होता था, स्टूडेंट्स जो थे वो दे वर सफरिंग। और मेरे पास अक्सर ये कंप्लेन आती थी कि हमें कोई बताने वाला नहीं है, सिखाने वाला नहीं है, जो लोग हैं वो भी लिमिटेड, उसके साथ पर्सनल शायद वो चीज़ें भी होती हैं, वो इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं कर सकते थे नॉलेज, विच आई वॉज एबल टू डू। डॉक्टर, विद रेफरेंस टू पाकिस्तान, इम्प्लीकेशंस कितनी हो रही हैं डायरेटिक प्रोफेशनल्स की, और रेजोल्यूशंस जो है कितनी इम्प्लीकेशन है इसकी, और इसमें आप क्या कर रहे हैं? डायटेटिक्स की दोबारा ज़रा क्वेश्चन रिपीट करें। डॉक्टर, कितनी विद रेफरेंस टू पाकिस्तान इम्प्लीकेशंस ऑफ डाइवर्जेंट व्यूज हैं प्रोफेशनल्स के, डायटेटिक प्रोफेशनल्स के, और रेजोल्यूशंस हैं काफी, तो इसकी कितनी इम्प्लीकेशन है पाकिस्तान? अच्छा, ये जो है ना, असल में न्यूट्रिशन हैज़ बीन स्प्लिट इनटू मैनी पार्ट्स। कुछ लोग कम्युनिटी न्यूट्रिशन की बात करते हैं, कुछ डाइटेटिक्स जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन, मेडिकल न्यूट्रिशन, हॉस्पिटल न्यूट्रिशन रिलेटेड टू पेशेंट ट्रीटमेंट, तो कुछ उसको प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन दिस इज ऑल सेंटर इज द सेम। न्यूट्रिशन हैज़ टू बी एवरीवेयर। आप डाइटिशियन हैं तो आप फर्स्ट आप यू हैव टू बी अ न्यूट्रिशनिस्ट, और कम्युनिटी में आप तो हैं ही न्यूट्रिशनिस्ट ऑफ कोर्स। तो इन एसेंस जो है ना, ये सारा यानी एक नटशेल में अगर करें तो न्यूट्रिशन साइंस जो है, बावजूद डाइवर्जेंट डायमेंशंस के, वो यानी एक पैकेज है जिसमें पीडियाट्रिक्स, मैटरनल, सर्जिकल, जिसमें एपिडेमियोलॉजिकल, एकेडमिक्स, सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। मीडिया, अब तो सोशल मीडिया में ज़्यादा ये आ गया, फिर उसके बाद मेडिकल न्यूट्रिशन आ गई। तो अब वो ट्रेनिंग का डिफरेंस है शायद, या वर्क एक्सपीरियंस का, तो अलग अलग जो है वो लोग अपने अपने सर्कल्स में काम कर रहे हैं। बट आई थिंक ऑन द पॉइंट ऑफ न्यूट्रिशन देयर शुड बी वन वॉइस। डाइवर्जेंट जो व्यूज़ हैं वो स्प्लिट कर देते हैं, वो अपनी अपनी एक्सपर्टीज। मेरी एक्सपर्टीज फॉर एग्जांपल ऑन्कोलॉजी की है या क्रिटिकल केयर है। आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज, नेफ्रोलॉजी और कार्डियोलॉजी। मुझे ये किसी के साथ ये कोई यानी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहिए। आई शुड नॉट गेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट। तो ये थोड़े से ना कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अपने डोमेन के अंदर रह के सब लोग काम करें, स्पेशलाइज्ड काम है ये। तो ऑब्वियसली जो एक्सपर्ट्स हैं मेडिकल न्यूट्रिशन के, दे आर नॉट एक्सपर्ट्स इन कम्युनिटी न्यूट्रिशन, उनको उनका काम करने दें, अपना काम करें। लेकिन फॉर द सेक ऑफ न्यूट्रिशन वी शुड बी वन, वी शुड बी वन वॉइस, यूनिफॉर्म यूनाइटेड वॉइस, कि इस प्रोफेशन को हमें प्रमोट करना है। इसकी आइडेंटिटी के इश्यूज हैं। देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी। आपको पता है पाकिस्तान में अभी तक
न्यूट्रिशन प्रोफेशन को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी नहीं है, नेशनल लेवल पे कोई फोरम नहीं है, काउंसिल नहीं है। ये बहुत बड़ा इशू है। इसकी वजह से इट्स अ बिग इम्पेडिमेंट, बहुत बड़ा हर्डल है, ये हमारे रास्ते का पत्थर है जिसको हटाना है, बल्कि अब चट्टान बना हुआ है। और उस वजह से वो डिफरेंसेस हैं, जो डाइवर्जेंट व्यूज़ की बात आप करें, हर डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट सजेशंस के साथ वो आ जाते हैं। लेकिन वो हम सारे ये चीज़ें भूल रहे हैं कि हम एक चीज़ पे तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से आप मेजर जो हमारे जो कंसेंसस है उससे नहीं हटना चाहिए। वो कंसेंसस से ना डिविएट करते हैं हमारे, इवन सीनियर लोगों को भी मैंने देखा है, वो भी दे आर डिविएटिंग फ्रॉम द मेन कंसेंसस और एग्रीड पॉइंट। उस पर तो इकट्ठा होना चाहिए, वो तो 90% तो एग्रीड है हमारी चीज़ें, 95%। एक यूनिटी के साथ काम होना चाहिए, जिसकी आई थिंक बहुत कमी है, और इसका है, इट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन यंग पॉलिटिशियंस। उनको डायरेक्शन नहीं मिल रही, और उनका मोराल जो है इज बीइंग अफेक्टेड, डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, रीजनल ग्रुप्स हैं, सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, 10 12 15 सोसाइटीज़ हैं। तो इट शुड बी एट वन फोरम, वन प्लेटफॉर्म, यूनाइटेड अलायंस की शक्ल हो, जैसे भी है, न्यूट्रिशन के लिए सब लोग इकट्ठे हों, और तभी ये प्रमोट हो सकता है। कन्वर्जेंस होना चाहिए, डाइवर्जेंस नहीं होना चाहिए। डॉक्टर, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम रखा है, उसके बारे में कुछ बताएं। उसकी क्या मिशन है, उसका क्या विजन है, उसके क्या गोल्स हैं? जी, बहुत अच्छी बात। या आपने अच्छा सवाल किया। अब जो मैंने कन्वर्जेंस की बात की ना, जब मैंने खुद भी फील किया कि डाइवर्जेंट व्यूज़ आ गए और स्प्लिट है, मुश्किल है लोगों को, यानी एक जगह, यानी यहाँ पे देखें ना, एग्रीकल्चर है एक, होम इकोनॉमिक्स उधर है, फिर फूड टेक्नोलॉजी भी है, फिर और यानी एंड एवरीबडी क्लेमिंग कि वो न्यूट्रिशन का जो शेयर है उनका ज़्यादा है, या वो ज़्यादा कर सकते हैं कंट्रीब्यूट। हालांकि सबका अपना अपना रोल है, यानी मैं लेट मी मेक इट क्लियर कि सब लोग ज़रूरी हैं, सबका अपना अपना मैंडेट है, रोल है, स्कोप है। ठीक है ना, ए कांट रिप्लेस बी एंड बी कांट रिप्लेस सी। ए की अपनी जगह, बी की अपनी जगह, सी की अपनी जगह है। तो उसको जो है ना, यानी जो जहाँ चीज़ है होनी चाहिए वहाँ हमें रखनी चाहिए, बीइंग रियलिस्टिक प्रोफेशनल्स। थोड़ा सा ज़रा यहाँ पे जो है ना, हम अनरियलिस्टिक हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, बाइस्ड हो जाते हैं, प्रिजुडिस्ड होने की वजह से आ, ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये डाइवर्जेंट क्रिएट किया उन्होंने, ठीक हो गया। अब मैंने एनालाइज किया सारे एनवायरनमेंट को, पाकिस्तान की सिचुएशन को, अपना फ्यूचर जो कि हाउ आई शुड कंट्रीब्यूट, कि इतनी इसमें ये पाकिस्तान से बाहर भी है ये सिचुएशन, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में भी है, मिडल ईस्ट में भी है। अब मिडल ईस्ट में दे डोंट recognize home economics to be accredited or as a licensed dietitian। वो होम इकोनॉमिक्स को एलिजिबल ही नहीं समझते। हालांकि अमेरिका में इज नॉट अ प्रॉब्लम, ब्रिटिश यूके में इज नॉट अ प्रॉब्लम। फिर कुछ जगहों पे एग्रीकल्चर में न्यूट्रिशन है तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, हालांकि न्यूट्रिशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर कॉलेज। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट आई एम शेयरिंग। बहुत सारे लोगों को पता है और कुछ नई जनरेशन को पता नहीं होगा। Actually, nutrition originated from the farmers, with the help of farmers. They are the pioneers. And I'm talking about 200 years back in America. Farmers थे, उन्होंने कॉलेज बनाया, एग्रीकल्चर नाम दिया उसको, एग्रीकल्चर कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड। वहाँ न्यूट्रिशन का जो फाउंडेशन स्टोन है ना, वहाँ रखा गया, वहीं से होम इकोनॉमिक्स ओरिजिन हुआ है उसका। एट द सेम टाइम और लैप्स ऑफ फ्यू ईयर्स, एग्रीकल्चर एंड होम इकोनॉमिक्स दोनों जो हैं ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम एग्रीकल्चर, कॉमर्स। तो इसको हमें रिकग्नाइज करना चाहिए कि सबका अपना अपना रोल है इसमें। कन्वर्जन से फिर मैं आपको बताता हूँ, अभी ब्रेक लेते हैं ज़रा, मोबाइल की जो है ना अलार्म बंद कर दूँ मैं, ये कट कर देंगे, जक्का को कहेंगे जक्का कट कर देगा। तो अच्छा, मैं अब आपको यहीं से ना आगे कंटिन्यू करता हूँ। देन आई थॉट कि
मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ एंड आई वांट टू शेयर माय नॉलेज जो कि मैंने कलेक्ट किया फ्रॉम पाकिस्तान फ्रॉम अब्रॉड and it is a variety of information and knowledge that I gathered in almost 25 years when I started science. So I thought of a platform where I can independently work without any hindrance, without any divergent views and conflicts. I want to be, I am very focused now. So I start with one project, start with one thing, and I take it to the extreme. And I dig it from at the deepest level. पूरी तरह मैं प्रोब करके उसको फुल यानी आई एक्सपेंड द बाउंड्रीज टू द मैक्सिमम उसकी जितनी होती है मैं मैक्सिमाइज करता हूँ ताकि उसकी इन डेप्थ नॉलेज भी हो सारी चीज़ें सारे एस्पेक्ट डायमेंशंस जो है वो सामने आए और वो शेयर हो सके तो कंसंट्रेटेड एफर्ट चाहिए उसके लिए फोकस्ड व्यू चाहिए था वो मैंने डेवलप किया और देन it materialized into the forum called or as Science International जिस पे हम फोकस कर रहे हैं वी स्टार्टेड फ्रॉम रिसर्च एनहांसमेंट रिसर्च स्किल रिसर्च लर्निंग रिसर्च नॉलेज एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन ये सारी चीज़ें दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव रिसर्च को कैसे हमने एंड गुड रिसर्च बेटर रिसर्च को कैसे प्रमोट करना है उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया फिर training program. Then I accredited, we accredited program from CDR, Commission on Dietetic Registration, and our program accredited in from South Africa, from some Middle Eastern countries. It's under process, so it will be accredited research program, and that research program is updated research program. It's not an old-fashioned research methodology courses. It is very dynamic program, very relevant to the present day research journals, guidelines, publications. ICMJE International Committee of Medical Journal Editor की guidelines, part of it, British Medical Journal guidelines इससे part of it है इसकी उसका हिस्सा है तो उस पे ये कंसिस्ट कर रहा है ये प्रोग्राम हमारा तो इसको हमने प्लेटफॉर्म जो इसके लिए क्रिएट किया साइंस उसका नाम रखा और उसमें फ्री कोर्सेज भी करवाए मैंने अफ्रीका में 500-600 लोगों को ट्रेन किया अब तक रिसर्च कोर्स यानी रन करके 4 लेवल्स पे है ये हमारा कोर्स तो रिसर्च प्रमोशन इज अवर मेन ऑब्जेक्टिव अवर मेजर गोल एट द प्लेटफॉर्म ऑफ साइंस और इट इज़ फॉर एवरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स नॉट ओनली फॉर डाइटिशियंस हमारे कोर्सेज में ज़्यादातर अभी तक जो ग्रेजुएट्स हैं वो डॉक्टर्स हैं फिजिशियंस हैं वो न्यूट्रिशनिस्ट कम है इसमें बट आई वुड लाइक कि न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियंस ये ज्वाइन करें हमारे डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशनिस्ट की जो हाइंड साइड है वीक साइड है और यानी वीक जो क्वेश्चन है वो है रिसर्च कैपेसिटी रिसर्च कैपेबिलिटीज़ हमारे डाइटिशियंस को और न्यूट्रिशन प्रोफेशनल्स को अच्छी रिसर्च आना चाहिए जो कि दैट कैन एड्रेस प्रेजेंट डे चैलेंजेस लाइक कोविड-19 और यानी कैंसर्स हैं और बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं इसमें वी कैन एड्रेस थ्रू अ बेटर रिसर्च or research that can fill the gap evidence gap and research that is accepted worldwide that is of interest that is novel that is relevant feasible research and that can meet the budget for all countries ऐसी research ये concept है ना फाइनल क्राइटेरिया है वो हम पढ़ाते भी हैं फाइनल क्राइटेरिया को मीट करने वाला रिसर्च होना चाहिए तो डाइटिशियंस को मैं चाहता हूँ कि इस तरफ आए इट्स माय मैसेज टू ऑल डाइटिशियंस in Pakistan and abroad. Worldwide, there's a deficiency of researchers in the profession of dietetic and nutrition. Nutrition में ज़्यादा लोग हैं, but nutritionists are doing a lot of work in research. बल्कि academics के साथ वो research ही करते हैं. But that only relates to the public. What about the medical side? What about the clinical side? Patients are dying
they are on the deathbed in ICU, in oncology wards, in surgical wards. पीडियाट्रिक्स में बच्चे जो हैं वो आप देखें, मेल न्यूट्रिशन है हमारे बच्चों में, क्वशारकोर है, मरिस्मिक बच्चे हैं, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में. Medical nutrition can play a bigger role, major role to prevent so many deaths, which are in millions. कम्युनिटी के लिए फूड बैंक का कॉन्सेप्ट भी है, वो भी हम रन कर रहे हैं. एनीवेज, तो मैं ये कह रहा हूँ कि रिसर्च को प्रमोट करें. रिसर्च शुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ डाइटिशियंस. ये मैं मैसेज देना चाह रहा था डाइटिशियंस को कि रिसर्च में ज़रूर पार्टिसिपेट करें. वंस इन अ ईयर present your research, publish your paper, attend the conference as a researcher, as a presenter. वहाँ पे ऐसा नहीं है जैसे मैंने देखा है, इट्स वेरी फनी, लेकिन पिकनिक मनाने के लिए नहीं जाना चाहिए. आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन के कॉन्फ्रेंसेस में जाएं, क्योंकि यूरोप का ट्रिप लग जाएगा, पिकनिक हो जाए. मैंने बहुत सारे दोस्त यहाँ भी देखे, मिडिल ईस्ट में भी देखे, बाहर भी. दे जस्ट कंसिडर इट एज अ पिकनिक, यू नो, इट्स नॉट अ पिकनिक. कॉन्फ्रेंसेस को मेक इट अ पॉइंट फॉर योर लर्निंग. आप प्रेजेंट करें. वेन एवर आई वेंट अब्रॉड, आई traveled abroad, and this is again a message for young dietitians. I traveled as a presenter. Alhamdulillah, I take pride of it, and Alhamdulillah, by grace of Allah, I presented whenever I attended the conference. It was not uh, you know a leisure trip. It was a business trip where I was a presenter. और उससे रिसर्च की वजह से था. ये मैंने सारा बैकग्राउंड आपको दे चुका हूँ कि रिसर्च के यू कैन रीप multiple benefits from research, or at the end of the day eventually the outcome will be the development, growth, and the innovation in the field of dietetics. ठीक है ना. रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है? इनोवेशन करना भी तो है ना. आप नई टेक्नोलॉजी इनोवेट करें, नए डिवाइसेस इनोवेट करें, नए टूल्स इनोवेट करें, थेरेपीज इनोवेट करें, डाइट्स इनोवेट करें. तो ब्रिंग इनोवेशन. हम वही कॉपी पेस्ट, इज नॉट एरा ऑफ कॉपी पेस्ट. दिस इज इनोवेशन इरा, इनोवेटिव इरा, इरा ऑफ इनोवेशन. तो कैसे इनोवेशन होगी? जब हम रिसर्च में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे. जब हमारे डाइटिशियंस में, आई एम टॉकिंग अबाउट डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट बहुत कुछ कर रहे हैं, एकेडमिशियंस, डाइटिशियंस जो है ना, वो दे शुड फोकस ऑन दिस साइड. दे हैव लॉट ऑफ डेटा, दे हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स. मेरे पास 30,000 पेशेंट्स का डेटा. मोस्टली मैंने, आई प्रिजर्व माई डेटा. आई सीन 30,000 पेशेंट्स. इट्स अ ह्यूज डेटा इन टर्म्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन screening, nutrition assessment, therapies, interventions, outcomes, recoveries, relapse, remissions, mortalities, length of stay, infections.